Okay, so this was the relationship. Okay, we know that P alpha. What is the P alpha? P alpha is, I have already explained, this is a 4 momentum. Okay, and we know that 4 momentum is equal to, what is that? That is P naught, P1, P2, P3. Okay, P naught kya tha? What is the P naught? P naught, momentum is mass multiplied by velocity. That was, if you want to write, because these 3 components are the same, this is time component, and these 3 components are the 1, 2, 3 mean these are the 3 components that was usually defined in, that is along the x-axis, along the y-axis and z-axis. These are the spaces. It is defined as space component, and this is defined as a time component, or temporal component. Okay? Okay, clear? So this is equal to, as that may be right as a mass multiplied by V naught, V1, V2, V3, MV. Okay, and this was, I have already, this mass was this was iota C, I think so. Okay, this was Vx, Vy, Vz. This mass was m naught, gamma mean 1 over. Okay, and this was Ic of Vx, Vy, Vz. Okay, this mass was the because this where gamma is 1 over 1 minus V over C square. All these things have been verified and proved in the previous lecture. Okay, so this we have done this. Okay, so this is the 4 momentum. Okay, so if this is momentum, this expression is 1. If I say this is expression A, okay. If I say that this expression is A expression is expression A is for mass moving with velocity V. If something is moving with velocity V. Okay, that I have already explained. Okay, here V is means this one means velocity, simple velocity. Okay? If the mass is moving with the velocity V. Okay, but if mass is this is not a power. Actually this is way to write in the form of the tensor. ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने अल्फा ऊपर लिखा तो that's why मैंने ऊपर लिख दिया. This is not power. This is the same as if I say that this is like this. Actually, when we will study the contravariant and covariant tensor, actually every vector must be right in the form of the contravariant and their projection will be a covariant. लेकिन खैर वो आपका भी पार्ट नहीं है. इससे मराद अब ठीक है, अगर आपने उस तरह भी नहीं पढ़ा हुआ तो क्योंकि हम इसे सिंपल स्पेस में ले रहे हैं, टेंसर में नहीं ले रहे, तो आप बेशक नीचे लिख लो. ठीक है, अब ठीक है बेटा. वैसे ये ऊपर से मतलब ये सुपरस्क्रिप्ट से मराद पावर नहीं है, स्क्वायर नहीं थी. इसका मतलब यही था कि ये फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट. एक्चुअली व्हेन यू विल स्टडी द टेंसर देयर विल बी 2 टाइप ऑफ द टेंसर. एक में सुपरस्क्रिप्ट होंगे, एक में सबस्क्रिप्ट होंगे. तो क्योंकि आप लोग टेंसर नहीं पढ़े तो आप टेंसर लिखें. ठीक है, इंशाल्लाह ताला जब आप में से तब आपको ये बताना पड़ेगा, ये ऊपर आएंगे. मैंने इस वजह से ये क्लियर किया कि जब आप टेंसर पढ़ो आगे तो आप कहो सर तो ना नीचे लिखते रहे, मतलब सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिखते रहे, तो ये सुपरस्क्रिप्ट है. एक्चुअली ये सुपरस्क्रिप्ट है. ठीक है, लेकिन आप इसे सिंपल लिख लें क्योंकि आप प्रीवियसली इसको, ठीक है. बट इट इज नॉट पावर. अगर आप सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में भी लिखते हैं तो ये दीज आर दी नॉट पावर. दिस ओनली मीन इज दैट इज contravariant tensor. Okay, but we are not using the tensor here. Okay,
है ये टेंसर ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उसे एज ए टेंसर की निगाह से नहीं देख रहे। So if A is a mass moving with the velocity, but if mass is at rest, if mass will be rest, then we will be zero. We will be zero, and when we will be zero, then gamma will be equal to 1 divided 1 minus V over C square. Okay, if we put the V equal to 0, this will be 1 divided by 1, that will become a 1. Yes. Okay, so momentum, linear momentum for you are right. If this expression for if the mass is moving, but now I am interested to find the momentum if the mass is rest. Is it have a momentum or not? But in relativistic, it will be have a momentum. Sorry, it will have. But in SSE or metric or in conventional non-relativistic mechanics, we have studied that if the velocity is 0, the mass multiplied by the 0, that will be the 0. In 3D, that will be a momentum will be 0. But in 4D, that will be not 0. Why that will be not? That is explaining. Okay. So if mass is at rest, okay, then momentum for rest mass, what will be the momentum for rest mass? That will be equal to, that will become P alpha. I should change the notation. May I write the prime? Prime means that is different momentum, okay, for different object. We may write that is, there are two ways. In the previous we have write PA, we may write as this is a PA and this is a PB. That's up to you. If I write that is PB, okay, for rest mass, if that is the B, okay. So what will be the rest mass? Yes. Okay. For rest mass, the momentum will be, the mass is the same, but when that is the rest, okay. यहाँ हम इसे प्राइम लगा लेते हैं, अभी हम प्राइम लगा लेते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है, चाहे बी लगा लो चाहे प्राइम लगा लो। तो यहाँ अगर प्राइम लगाना है तो फिर एक ही जरूरत नहीं, ठीक है। पी प्राइम और पी ए और पी बी, इट्स अप टू यू, ओके ओके। Then gamma will become 1, okay. Then P alpha will be equal to m naught, okay. Iota c, iota means -1 का square root. V0, then its component will be also 0. Vx will be 0, Vy will be 0, Vz will be 0. So this will be a 0, 0 and 0. Okay, got it? And this will be a relationship B. Got it? Velocity 0, 0, 0. So this momentum is not 0 in a 4 dimension because its sign component will be not a 0 because it is not 0. Okay. Okay. So from P alpha, P square, what will be the P square? P square will be P alpha dot P alpha. I have already explained, whenever you are interested to find the square, that will be the square of the magnitude of that vector, and that will be only find by taking the dot product with that. Okay. If we are interested to find the P alpha square, we have to take the dot product. Okay, P alpha with the P alpha. And how you will find the dot product? You will take the transpose of the first vector
and the second will be remain the same. Yes, if I say that this अगर मैं ज़्यादा क्लियर करना चाहूँ ताकि मुझे अल्फा और टी ऐसे ना लगे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी we will take the transpose of this and this will be remain this. Okay, if I take the transpose of the first from A, ठीक है, from equation A, तो ये अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? This is I have already explained that this is a time component and these are the space component. The velocity of the space component will be 0. This is C. C is a constant. यहाँ कोई आपके पास वो multiply नहीं हो रहा. So time component will be not 0. ये Vx, Vy, Vz will be 0. Okay, but this time component there is no variable is here, not V naught, X naught, nothing. Okay, but this is the time component. Not component is the time component. Okay, so that's the difference than the space component. हम जो velocity लेते हैं वो space component वाली लेते हैं, ठीक है? ये that's why I have used this V mean, मैं दोबारा लिख देता हूँ. This V mean Vx, मैंने पहले बता दिया था, sorry, इस तरह नहीं लिख सकते. This means Vx, Vy, Vz. I have already explained the if I as I have when I Umar, when I have used this notation, it means XYZ component. Whenever I have used this, yes, GR. So here, if I use this notation, this means Vx, Vy, Vz, not zeroth component. Okay, space component, and that is 0. If that is 0, mean it's all component is 0, null vector mean. Okay, got it? Okay, so this is a Vx, Vy, Vz. ये वो वाला V है. Okay? जब भी मैं ये नोटेशन बार यूज करूंगा, बार मीन Vx, Vy, Vz. That bar means space component. Okay, got it? Okay. So, what will be the result of m naught gamma I C Vx, Vy, Vz का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई m नॉट gamma iota c Vx, Vy, Vz. Okay, when we multiply, these are the simple numbers, mean these are not matrices, so transpose will be not affect on that. That will become m naught gamma square, and this will become iota c Vx, Vy, Vz, and that will be equal to iota c Vx, Vy, Vz. Okay, when we multiply row with the this will be multiplied with this will be this, and this will be this, and this will be this, and so this will become m naught square gamma naught square. Okay, yes, okay, so this will be equal to m naught gamma square iota square is equal to, Umar, please be silent. Iota square is equal to -1 c square plus Vx square plus Vy square plus Vz square, because when we take when we multiply matrices, this will be sum. Okay, so this will be equal to this. Okay, so this is alpha square. If I say this is equation x, I have choose. Yes, yes, पूछो.
if you watch again this video, ठीक है, I have उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसी मेरी बात थोड़ी सुन लो, उसी लेक्चर में मैंने बताया था there are टू टाइप ऑफ द मैट्रिसेस। अगर हम उसे, मैंने कहा था टेंसर की फॉर्म में लेंगे, तो हमने टेंसर की फॉर्म में, मैंने कहा अगर आप यूक्लिडियन स्पेस में लेंगे तो हम सबको ट्रांसपोज की फॉर्म में करेंगे, याद होगा वो लेक्चर देखो, ठीक है। और उसमें हमने ऐसे ट्रांसपोज ही दिया था, उस लेक्चर में भी आप देखो ट्रांसपोज, क्योंकि हम उसे मिन्कोस्की स्पेस में नहीं सॉल्व करें। जब हम सॉल्व करेंगे उसे मिन्कोस्की स्पेस में, तो तब हम उसे कंट्रावेलेंट कोवेलेंट, अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो उसमें मैंने, आपने उसमें भी देखा होगा, उस तमाम लेक्चर्स में मैंने ट्रांसपोज ही, इवन कम्प्लेक्स नंबर होने के बावजूद मैंने ट्रांसपोज दिया, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ था, ठीक है। हम वही प्रोसीजर को फॉलो करें, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू पी अल्फा स्क्वायर, ओके। सो दिस विल बी पी अल्फा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओके। हम नॉट करते, ओके, ये आ गया। इसे वैसे अल्फा की स्क्वायर थी, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, इसको बाहर लोग जो है ना इस तरीके से भी लिख देते हैं, सी स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसे पी अल्फा की जगह यूजली लोग पी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। पी स्क्वायर मीन, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। जब भी अल्फा यूज करेंगे टेंसर में आप नोटेशन ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी आपके ऊपर नोटेशन यूज हो रही हो तो कंपोनेंट है, जब भी उसका नोटेशन सॉरी इंडिसेस ना हो तो उसका मतलब होता है कि वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। हैव यू गॉट इट? ओके, दिस इक्वल टू दिस, एंड फॉर रेस्ट मास, so rest mass from B, P dash alpha square, sorry, P dash square, that will be equal to P dash alpha dot P dash alpha. P dash alpha transpose P dash alpha, ओके, इसका ट्रांसपोज और ये एज इट, एंड व्हाट इज दिस, एम नॉट, मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूं, रो पहला रो है, ठीक है, एओटा सी 0 0 0 एम नॉट स्क्वायर, दोनों का एम नॉट आया, aorta C 0 0 0, okay. So from here P dash square will be equal to, yes, M naught square, aorta square is minus C square, आगे सब कुछ 0 है, minus M naught C square, okay. This is X and this is Y, okay. P momentum is a, if I momentum is a vector or non-vector? Vector, okay. मैं बताता हूँ, मोमेंटम इज अ वेक्टर, वैसे, ठीक है। तो एक्चुअली व्हेन मोमेंटम विल रिमेन, momentum must be remain invariant for all frame of references, because vector must be remain invariant. The length of the vector, sorry, मैं गलत बोल रहा हूँ, वेक्टर सेम नहीं रहता, लेंथ ऑफ द वेक्टर विल रिमेन दी सेम। सो ये भी लेंथ है, स्क्वायर है, मोमेंटम की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये भी मोमेंटम की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। दे मस्ट बी, बिकॉज इवन दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट देयर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, momentum itself will be different, these are the different, these are the different, okay. A and B is not equal, but their magnitude will be same, okay.
लेंथ मीन मैग्नीट्यूड, मैं वही कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड। Since P alpha and P alpha prime, they will not same. Momentum in different frame of reference will be not. Momentum in different frame of reference will not same. I have already explained it. Yeah, that is the one two जो आप पूछ रही थी. The momentum will not same, vector will not same, but this magnitude, a square of the magnitude will be remain the same. But its magnitude P alpha square, sorry, P square will be equal to P prime square. Same for all frame of reference. Yes? Okay, that will be the same. Okay, so this implies that, so from X and Y we have, what will we have, what we will get? Both will be same. This will be equal to this. P square is equal to P prime square. So both will be equal. Okay. So ये डिफरेंट फ्रेम की डिफरेंट वैल्यू निकाली है और जो हमारे पास हमने कहा है मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों को हम बराबर लिखेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? एम नॉट स्क्वायर गैमा स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर plus Vx square plus Vy square plus Vz square, this equal to m naught minus m naught c square. Okay, m naught square. Okay, यहाँ भी m naught square. Oh sorry, you are right. ओके ओके, नहीं अभी हमने नहीं करना, उसकी वजह बता. ओके, m naught gamma is equal to m. Okay, so you will get m minus c square plus v square means I have already explained. Okay, m square minus m naught square c square.
This will be equal to this. Okay. हमारे पास क्या आ गया था, पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये आपके पास रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसको हम आर वी मे राइट, इस तरीके का भी रिलेशनशिप बाद का पूछा जाता है, बाद का ये भी लिखते हैं बाद बुक्स में, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। बाद का ये भी ड्राइव के लिए आ जाता है, बाद का ये भी ड्राइव के लिए आ जाता है। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज अ कंप्लीट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, इफ मल्टीप्लाई with the c square multiply with equation z1 with c square. If we multiply the z1 equation with c square, okay, then this will become a c square p square, ठीक है, minus m naught square c square, okay, and that will be equal to minus m naught minus m naught. Okay, may I write in this way? Okay, I am multiplying z1 with this, but E equal to mc square, we will prove it, okay. Then and E naught is equal to m naught c square rest mass energy, okay. In some books that is only the proof is c square p square minus e square इक्वल टू माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये भी यूज होता है फार्मूला, ठीक है, ओके। बस एक मिनट पे, and other is, and we also use c square p square minus e square equal to minus e naught square, okay, but mostly we use this formula, okay. Okay, so there are two, r c square p square minus e square equal to minus m naught c square, ओके। व्हाट इज, आज के लिए इतना ही, ये प्रूव कर लिया, ठीक है।